Hello students, hope all of you are well and fine. आज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स चैप्टर का थर्ड क्लास, जिसमें हम लोग एक और सवाल सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको दो मेथड सिखाया था। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में टोटल 3 मेथड है: एसेट बैकिंग मेथड, यील्ड बेसिस मेथड, फेयर वैल्यू मेथड। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने एसेट बैकिंग मेथड का दो अप्रोच होता है, लाइबिलिटी अप्रोच एंड एसेट अप्रोच। मैंने लाइबिलिटी अप्रोच से सम सॉल्व किया था, समझाया था, लाइबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था। और उसी वीडियो में मैंने यील्ड बेसिस मेथड में भी दो मेथड होता है, एक प्रॉफिट बेसिस, एक डिविडेंड बेसिस। तो मैंने डिविडेंड बेसिस को एक्सप्लेन किया था। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको एसेट बैकिंग मेथड का एसेट अप्रोच से एक सवाल सॉल्व करके दिखाया था और फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया था। आज एक और सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट को और भी क्लियर करेंगे। अपना ही स्टडी मटेरियल से ये सम्स को मैंने सिलेक्ट किया है। अपना स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 31, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ के लिमिटेड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर अंडर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड एंड अर्निंग यील्ड मेथड। अर्निंग यील्ड मेथड मतलब यील्ड बेसिस मेथड, एक ही बात है। टेंजिबल एसेट, गुडविल, करेंट एसेट। अच्छा देखिए, दोनों मेथड के लिए मार्क्स अलॉटेड है 5+5। टेंजिबल एसेट, गुडविल, करेंट एसेट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, दिस इज आवर फिक्टिशियस एसेट। 5% डिबेंचर, करेंट लायबिलिटीज। नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years is already given in the problem. It is the practice of the company to transfer 20% of the profit to reserves. Normal rate of return is 10%. Issued and paid up capital 80,000 equity shares of 10 each, fully paid up. हमें दो मेथड से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू बाय इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के अंदर दो मेथड है। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड एसेट बैकिंग मेथड का दूसरा नाम है। There are two approaches under intrinsic value method, rather asset backing method. One is asset approach and another one is liability approach. We are going to apply asset approach because all assets what we need for doing asset approach is given in the problem. Tangible asset, goodwill, current asset. These are the three assets. And this one is fictitious asset. Now टेंजिबल एसेट, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट अवेलेबल, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। एसेट बैकिंग मेथड में सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। एसेट अप्रोच में पहले आपको सारे एसेट्स लेना है। मार्केट वैल्यू दिया तो मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं दिया तो बुक वैल्यू, बट फिक्टिशियस एसेट को नहीं लेना है। ये फिक्टिशियस एसेट है, ये छोड़ के सारे एसेट को लेना है। ये रहा, यहां से लेस करना है करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में क्या है क्वेश्चन में? करेंट लायबिलिटीज में क्वेश्चन में है करेंट लायबिलिटीज 2,60,000 नाम से ही दिया है। माइनस करने से क्या आ जाएगा? इट विल कम नेट वर्थ और नेट एसेट। इसके संग चार चीज लेस होता है। डिबेंचर, डिबेंचर भी है क्वेश्चन में, ये देखिए 5% डिबेंचर 2 लाख रुपया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेस होता है, वो नहीं है। एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है और लोन का अमाउंट भी नहीं है। ठीक, तो ओनली डिबेंचर का अमाउंट लेस होगा। होने के बाद नोशनल कॉल ऐड होता है, बट शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, तो नोशनल कॉल नहीं है यहां। यानी ये जो हमारा आया नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये रहा। ये जो नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आया, इसको हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे। ये देखिए 80,000 इक्विटी शेयर्स है, तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा? इंट्रिंसिक वैल्यू पता चल जाएगा। ये देखिए नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नेट एसेट अवेलेबल इज हाउ मच?
11,60,000 and number of equity share is already given in the problem. Divide it, you will get the intrinsic value of each equity share. Yeah, there. Now the second part is yield basis method. Under yield basis method, there are again two approaches. One is profit approach and another one is dividend approach. In the first video, I have taught about dividend approach. In this video also, I will apply dividend approach. डिविडेंड अप्रोच में सबसे पहले जो आपको निकालना पड़ता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग. नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग दिया रहता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग, बोथ आर सेम. In dividend approach, first we have to calculate what? First we have to calculate expected rate of return. Now, what is the formula of expected rate of return? The formula of expected rate of return is profit available for equity shareholders divided by paid up equity share capital multiplied by 100. Now, this is the formula. So, first of all, we have to calculate how much profit is available for equity shareholders. So 3 साल का profit, the profit for last 3 years is already given in the problem. Now we want to calculate the profit available for equity shareholder. First we have to find out the average profit. पहले average profit निकाल के आपको डालना है. Average कैसे निकलता है आप जानते ही हैं, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड. ये देखिए डिविडेंड बेसिस में कर रहा हूं मैं, यील्ड बेसिस मेथड का डिविडेंड बेसिस. यील्ड बेसिस में दो मेथड है, वन इज प्रॉफिट बेसिस, अनदर इज डिविडेंड बेसिस. नाउ आई एम डूइंग विद डिविडेंड बेसिस. First, we have to find out the average profit because average profit is not given. Individually, the profit of last 3 years is already given. Now, find out the average. You will get the average amount. From here, you have to make two adjustments. First, you have to transfer to reserve. Now, how much amount to transfer to reserve is already given in the problem? 20%. It is the practice of the company. Company is following the policy of transferring 20% of the profit every year to reserve fund. So you have to deduct 20% of this amount for transferring to reserve fund. One more adjustment you have to do, that is current year preference dividend you have to deduct, but there is no preference share capital given in the problem. So you don't have to deduct current year preference dividend. If preference share capital and its percentage is given in the problem, then you have to deduct the current year preference share dividend. But there is no preference share capital. So no question of arising preference share dividend. So you will get what? You will get profit available for equity shareholders. This is profit available for equity shareholders. Now, just I have told you, first under dividend basis method, you have to find out what? You have to find out expected rate of earning. Now, what is the formula of expected rate of earning? Profit available for equity shareholder, it will come in the numerator, and in denominator, paid up equity share capital. Now, from where will you get paid up equity share capital? It is already given in the problem. Look at this, 80,000 equity shares of 10 each. That means 8 lakh rupees. So the formula of expected rate of earning is in the numerator, you have to put profit available for equity shareholders divided by paid up equity share capital. Paid up equity share capital 80,000 shares into 10, that means 8 lakh multiplied by 100, you will get expected rate of return. Look at this. Profit available 82,800. Just now you have computed. Now divided by what? Divided by paid up equity share capital, which is 8 lakh rupees multiplied by 100. You will get the percentage. The what percentage? Expected rate of return. This is not the price of share under dividend basis method. The formula for calculating price per share under dividend yield method is expected rate of return by normal rate of return multiplied by paid up value of each equity share. Expected, I repeat, expected rate of return. Expected rate of return is this one. Normal rate of return. From where will you get? You will get from the sum. The problem, 10% is normal rate of return multiplied by paid up value of each equity share. Now what is the paid up value of each equity share? Paid up value of each equity share is rupees 10. So let us
apply in the formula. First write down the formula. Expected root again, this expected rate of return by normal. This is your expected rate of return. Normal rate of return is already given in the problem. Paid up value of each equity share is also given in the problem. So your price per share under yield basis method is 10.35. Thank you, students.